a vital lesson of the need to be self-reliant. The Prime Minister adds, stronger the panchayat, the stronger will be democracy. Prime Minister Modi launches integrated e-Gram Swaraj portal and integrated Swamitwa Yojana. While the e-Gram Swaraj portal will provide the interface to prepare and implement Gram Panchayat development plan, the Swamitwa Yojana will provide an integrated property validation solution for rural India. The Home Affairs Ministry clarifies misplaced apprehensions of industry associations regarding legal liability on the company CEOs. The Home Secretary says no legal action, including imprisonment of the CEOs in case employees found COVID-19 positive. After Goa and Manipur, Tripura now becomes the third coronavirus-free state as its second patient recovers. The total active cases in the country now reach 17,610. 4,748 patients have recovered while 718 have succumbed to the virus. The first human trial of COVID-19 vaccine begins in Britain. 2 volunteers get potential vaccine at the Oxford University. Scientists express hope for positive results. The global cases of COVID-19 continue to rise with over 27 lakh confirmed cases and 1,90,000 deaths. The US is the worst hit with near 50,000 deaths, followed by Italy, Spain and France. Hello and good afternoon. You're watching Doordarshan News with me, Nancy Kohli. Our top story: on the occasion of the National Panchayati Raj Day, Prime Minister Modi has launched the unified e-Gram Swaraj portal and the mobile app for the Gram Panchayats. The unified portal is a new initiative of the Ministry of Panchayati Raj that will provide the Gram Panchayats with a single interface to prepare and implement their Gram Panchayat development plan. ई-ग्राम स्वराज यानी सिंप्लीफाइड वर्क बेस्ड अकाउंटिंग एप्लीकेशन फॉर पंचायती राज। ये एक प्रकार से ग्राम पंचायतों के संपूर्ण डिजिटलीकरण की तरफ एक बड़ा कदम है। ये भविष्य में ग्राम पंचायत के अलग अलग कामों का लेखा जोखा रखने वाला सिंगल प्लेटफॉर्म बनेगा। अब अलग अलग एप्लीकेशंस में अलग अलग काम करने की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। Prime Minister Modi also launched the Swamitwa scheme on the occasion. The scheme provides for an integrated property validation solution for rural India that demarcates inhabited land in rural areas by the use of latest surveying methods like the drones technology. The Prime Minister said that the scheme will benefit the Panchayati Raj system in several ways. स्वामित्व योजना से गांव के लोगों को एक नहीं अनेक लाभ होंगे। पहला तो यह कि प्रॉपर्टी को लेकर जो भ्रम की स्थिति रहती है वो दूर हो जाएगी, झगड़े खत्म हो जाएंगे। दूसरा, इससे गांव में विकास योजनाओं की बेहतर प्लानिंग में और ज्यादा मदद मिलेगी। And addressing the Gram Panchayat members, the Prime Minister also said that the coronavirus pandemic has taught a vital lesson to one and all. That lesson is one of self-reliance. The Prime Minister also said that be it a village, district, state or a nation as a whole, everyone must strive to become self-dependent. कोरोना संकट ने अपना सबसे बड़ा संदेश, अपना सबसे बड़ा सबक हमें दिया है, हमें सिखाया है और एक प्रकार से उस रास्ते पर चलने के लिए हमारा दिशा निर्देश किया है। और वो रास्ता क्या है, वो दिशा क्या है?
इस कोरोना संकट से हमने अनुभव में पाया है कि अब हमें आत्मनिर्भर बनना ही पड़ेगा। बिना आत्मनिर्भर बने ऐसे संकटों को झेल पाना भी मुश्किल हो जाएगा। Prime Minister Modi interacted with the various Gram Panchayat members, and here are the 10 big takeaways from that interaction. While interacting with the Gram Panchayat members, Prime Minister said that the COVID-19 pandemic has taught India a new lesson, and that is of becoming self-reliant. He said it is crucial to achieve this goal at every level, be it a village, district, state, and the country as a whole. The COVID-19 pandemic has thrown up new challenges that has changed the working patterns. Prime Minister Modi complimented the work of Gram Panchayats in maintaining social distancing using the Do Gaj Duri mantra. Prime Minister Modi also emphasized on the use of technology that will empower the rural India. He also launched e-Gram Swaraj portal to make panchayats completely digital that will empower the rural areas. He also stressed on the infrastructure development which panchayats are working on. इस कोरोना संकट ने दिखा दिया है कि देश के गांव में रहने वाले लोग भले ही उन्होंने बड़ी बड़ी और नामी यूनिवर्सिटी में शिक्षा न ली हो, लेकिन इस दौरान उन्होंने मतलब आप सब ने अपने संस्कारों, अपनी परंपराओं की शिक्षा के अद्भुत दर्शन कराए हैं। गांवों से जो अपडेट आ रहा है, जो जानकारी आ रही है, वो बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी प्रेरणा देने वाली बातें हैं। आपने सिंपल सा मैसेज दे दिया, 2 गज दूरी का, 2 गज दूरी का, या कहें 2 गज देह की दूरी का। इस मंत्र के पालन पर गांवों ने बहुत अद्भुत काम किया है। Prime Minister Modi interacted with the Gram Panchayat members of Jammu and Kashmir's Baramulla and Iqbal. The Gram Panchayat member said that awareness programs has been done in full swing in all the districts. He also said that people having travel history were traced and quarantined. The Prime Minister also interacted with Karnataka's Naveen Kumar, who said that all the measures are being taken for successful implementation of the lockdown. The Prime Minister lauded the efforts of both the Gram Panchayat members who performed their duties with courage and dedication. भाई मोहम्मद इकबाल जम्मू कश्मीर के बारामूला से जुड़े रहे हैं। ये ब्लॉक पंचायत नारवाव के चेयरमैन है। इकबाल जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं पहले जम्मू कश्मीर से डिस्ट्रिक्ट बारामूला और ब्लॉक नारवाल से आपको बहुत हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं। हमारे ब्लॉक में वो कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसमें हमारी टीम, जिसमें हमारे पीआरआई, जिसमें हमारे मेडिकल और आईसीडीएस के वर्कर्स नहीं गए और हर एक फर्द को, हर एक इंडिविजुअल को अवेयर किया कि कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है। हमारे ब्लॉक में आज तक सिर्फ एक पॉजिटिव केस आया, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारी वहां पे पंचायत एस्टैब्लिश नहीं हुई है। रीजन ये था कि हमारे वहां पे पंचायत मेंबर्स नहीं थे और वो केस हम ट्रेस आउट नहीं कर पाए। लेकिन जितने भी बाकी गांव हैं, जितने भी बाकी ब्लॉक्स है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद से, हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद से हमने हर एक फर्द को, हर एक इंसान को ट्रैवल हिस्ट्री जिसकी थी उसको आइडेंटिफाई किया, उनको क्वारंटाइन किया, उनको होम क्वारंटाइन किया और पीआरआई को वहां पे ड्यूटी लगा दी, 24/7 वहां पे ड्यूटी लगाई कि ताकि उनका जो होम क्वारंटाइन है वो सक्सेसफुल हो जाए। मुझे विश्वास है कि 2 गज की दूरी, इस मंत्र को आप गांव गांव, घर घर और पूरे जम्मू कश्मीर को भी आपसे सीखना चाहिए। मैं आपको बधाई देता हूं, बहुत उत्तम काम किया है और आपके ब्लॉक के सभी नागरिकों को भी मेरी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और रमजान का महीना है,
तो आपने जो मेहनत की है उसके कारण रमजान का उत्सव भी त्योहार बहुत अच्छे ढंग से नागरिक मना पाएंगे। तो आपने सचमुच में बहुत बड़ी सेवा की है। कर्नाटक के चिक्काबल्लापुर से हमारे साथ श्री नवीन कुमार जी जुड़ रहे हैं। देश के प्रधान सेवक आपको वारदसल्ली ग्राम पंचायत के सेवक से नमस्कार। कि आजकल मुझे गांव के प्रधान से भी बात करने का सौभाग्य मिलता है और दुनिया के बड़े बड़े देश के बड़े बड़े प्रधानों से भी बात करने का मौका मिल जाता है। हमारे ग्राम पंचायत में कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति नहीं है, पर 14 लोगों को हमने होम क्वारंटाइन में रखा हुआ है। इनको पंचायत के द्वार पर पानी, दूध, सब्जी, राशन आदि की व्यवस्था घर पे ही कर रहे हैं। वैयक्तिक और सामुदायिक स्वच्छता के बारे में हर जगह में अच्छे से आईसी हुई है और क्लीनलीनेस भी हुई है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण उद्योग खातरी योजना के तहत पंचायत के श्रमिकों और किसानों को वैयक्तिक कामगारी और जल संरक्षण की कार्यकारी में हम भाग लेने का अवसर कर रहे हैं। इससे ग्राम पंचायत में भी उन लोगों का मनोबल बढ़ा रहा है। नवीन जी, आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? 8500 सर। बड़ा गांव है। आप कितने साल से सरपंच है? फर्स्ट टाइम सर। फर्स्ट टाइम बने हैं, लेकिन आप बहुत अद्भुत काम कर रहे हैं और बड़े सिस्टमेटिक कर रहे हैं, प्लानिंग से कर रहे हैं। लेकिन गांव वाले आपकी बात मानते हैं? यस सर, मानते हैं। Now, Tripura has become the third coronavirus-free state in the country after Goa and Manipur, as the second COVID-19 patient in the state has tested negative for 3 consecutive times. The first positive patient was discharged from the hospital 7 days back after being recovered and testing negative. The Chief Minister has thanked doctors, healthcare staffs and all the frontline warriors and the public for making Tripura a coronavirus-free state. He's also urged people to maintain social distancing and also to follow the government guidelines. त्रिपुरा कोरोना मुक्त हुआ है। 2 पॉजिटिव केस से त्रिपुरा में हुई थी और दोनों के दोनों, एक तो पहले ही कोरोना मुक्त होके डिस्चार्ज हो चुके हॉस्पिटल से और दूसरी केस भी आज डिस्चार्ज हो चुकी है। मैं इसमें पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं त्रिपुरा वासियों की तरफ से कि आपने जो मार्गदर्शन पूरे देशवासियों को, दुनिया को दिखाया, उसी दिशा को सामने रखे त्रिपुरा की जनता ने ढंग से उस लॉकडाउन को माना। And according to the latest data from the Health Ministry, the total number confirmed cases of COVID-19 in India now stands at 23,077, with total active cases at 7,610. 4,748 patients have recovered, while 718 have succumbed to the virus. And amid the national lockdown imposed due to COVID-19 pandemic, Kerala has seen relaxations of the norms in 10 orange districts from today onwards. With its recovery rates being high, Kerala has seen positive signals in the COVID-19 scenario. The source of transmission is slowly changing from foreign returnees to those from interstate travels. Our Thiruvananthapuram team joins with the updates from the state. Today, 24th April, Kerala has seen relaxation in norms of lockdown for most of its districts. 10 of its orange category districts will see relaxation norms to kick in from today onwards. Except for the 4 red zone districts and the hotspot regions within the state and within the different districts, lockdown norms will slowly ease. We are standing in Trivandrum Corporation area, which is technically a hotspot region and hence monitored continuously in its entry and exit points. And we are standing at one of the entry points into the corporation where checking is happening thoroughly by the police. Thursday, Kerala has seen 10 new cases and the total confirmed cases has risen to
447. But the hopeful fact is that only 128 patients are currently under treatment, except for the 3 casualties which happened. So the recovery rate is quite an encouraging signal from the state of Kerala. However, 2 districts have slipped back from the green category to the orange category yesterday night, Idukki and Kottayam, with fresh cases reported yesterday. There is a slow change in the source of infection within Kerala. Earlier, it used to be from the foreign returnee, and that was rampant, especially in the northern Kerala. Now, the signals are showing a clear trend that the source of infection is from the interstate travel, and state authorities are making sure that its border areas are closely monitored. The holy month of Ramzan has started in Kerala. All the community leaders, all Muslim religious scholars have exhorted people to remain at their home and ensure there is no social gathering and strictly complying to social distancing norms. And that is a clear positive signal from Kerala now onwards. This is Ajay reporting from Trivandrum for DD News. The Minister of State for Home Affairs, Kishan Reddy, has addressed the passing out parade ceremony of the Central Reserve Police Forces via video conferencing. And while addressing the event, the Minister said that the troops of the force have been putting their life at risk to ensure the security of the nation, and protecting citizens from COVID-19 is a new challenge for them. आज सभी चुनौतियों के साथ साथ आपको सामने कोविड-19 जैसे महामारी का चुनौती भी खड़ी है। आपकी तैनाती जिस भी क्षेत्र में होगी, जो भी जिम्मेदारी आपको दिया जाएगी, वहां आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ इसी महामारी से निपटने में भी आपका पूरा योगदान रहेगा। आज भी मुझे खुशी है कि सीआरपीएफ का कोविड-19 जैसे महामारी से लड़ने में पूरे देश में मदद कर रही हैं। He also paid tribute to the Jawans of the CRPF on behalf of Prime Minister Modi and the Home Minister Amit Shah as well. Kishan Reddy underscored the crucial role the CRPF plays in bolstering the unity and the integrity of the nation. देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह जी की ओर से, होम डिपार्टमेंट की ओर से मैं ढेर सारी शुभकामनाएं आप सब लोगों को मैं देता हूं। ड्यूटी के दौरान इस बल के वीर गति को प्राप्त हुए 2200 से अधिक बहादुर शहीद आन बान शान की, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राण दिए गए, मैं हम सबके तरफ से उनको भी नमन करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। Now, writing to the Chief Secretaries of all the states, the Union Home Secretary has clarified some apprehensions based on the misinterpretation of the guidelines raised in the media and by some companies having manufacturing facilities. The Union Home Secretary has enumerated some of these apprehensions in his letter to the Chief Secretaries. The apprehensions include that the states may take legal action, including imprisonment of the CEO in case a COVID-19 positive employee is found in the factory. The premises of the factory would be sealed for 3 months. However, the Home Secretary has clarified that there is no such clause in the revised guidelines, and therefore there is no basis for such apprehensions. It was further clarified that activities allowed under consolidated revised guidelines have subsumed all the earlier activities that were permitted under the earlier guidelines issued have also been permitted. Now, in fact, moving on to some other news, the Union Health Minister Dr. Harshvardhan chaired a meeting with the Minister of State Ashwini Chaubey and senior officials of the ministry, and they reviewed the measures and the progress made by the country. And during the meeting, in fact, the Health Minister expressed satisfaction that the doubling rate of the cases in the country is at around 9 days now. Our mortality and recovery rate is much better than many other countries across the world. And the total number of the cases in the country has now crossed the 23,000 mark.
आज हमारा डबलिंग रेट भी वो 9 के आसपास है। सारे देश को हमने उन जिलों में बांटा है जहां कोई केस नहीं हुआ है, हमने उन हॉटस्पॉट्स में बांटा है जहां 15 से ज़्यादा या 15 से कम केसेस हैं, और हमने उन नॉन हॉटस्पॉट्स में भी बांटा है डिस्ट्रिक्ट्स में जहां की 1 आध 2-3 केसेस हैं। आज भले ही कोई स्थानों पर केसेस के नंबर बढ़ रहे हों, लेकिन हम इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए एकदम बेहतर स्थिति में हैं। Around 5 lakh tests have been conducted in the country, and India now has nearly 350 private plus government laboratories. The minister also reassured that there is any defective PPE kits that India has purchased from abroad, then it will surely be returned. There is an increase in the protective equipment and the N95 mask manufacturers in the country. PPEs, N95 मास्क, आने वाले समय में वेंटिलेटर्स, जो नेसेसरी दवाइयाँ हैं, उन सब के बारे में हम लोगों ने अपनी स्थितियों को पहले से बहुत ज़्यादा सुधार लिया है। PPE किट जो कि हमारे देश में बनता नहीं था, ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है कि अब इस समय 100 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरर्स जो है भारत के अंदर इसके लिए तैयार हो गए हैं। एक दिन में लगभग 1 लाख से ज़्यादा PPE किट्स और 1 लाख से ज़्यादा N95 मास्क का वही हम भारत में बना रहे हैं। Now, Uttar Pradesh has become the first state to geotag its community kitchen and shelter homes across 75 districts. The state government has also linked all these locations with the Google map to help people find free of cost food and shelter. Moving on now, the US House of Representatives has passed a $484 billion coronavirus relief bill on Thursday. The legislation, approved by 388 to 5, devotes more money to a small business aid fund, hospitals and wider testing. Now, this is the 4th bill passed by the Congress to address the COVID-19 crisis. The House action sent the latest of 4 relief bills to the White House, where Republican President Donald Trump has promised to sign it quickly into law. The U.S. has 8,66,646 confirmed cases of the COVID-19 and 49,759 deaths so far. The U.S. recorded 3,176 deaths in the last 24 hours only. And the first trial of coronavirus vaccine began in the UK on Thursday, and 2 volunteers, Edward O'Neill and Elisa Granato, were the first people in the world to get a potential vaccine at the Oxford University, as the scientist in charge of the project said that she was very optimistic it would be a success. The Oxford scientist last week said that large-scale production capacity was also being put in place for mass production of the doses of the vaccine under trial. Meanwhile, the pharmaceutical companies from Italy, Germany and Belgium are all working together on another potential shot and aim to start trials in a few months. Now, as many as 100 potential COVID-19 candidate vaccines are now under development by biotech and the research teams all around the world. The race for a vaccine has been fueled by the shortage of options for treating the COVID-19. And with that, it's a wrap on this edition of the news. Thanks for being with us.